Good morning, everyone. First जो मैंने टिके लाइव चैट रे लाइव अछंती मते टिके क्लियर कर दियंतु कि ऑडियो एंड जो पीपीटी मु ओपन करिछि स्क्रोल करूछि टिके से सब क्लियर अछि कि नहीं 1 मिनिट दउछि एठी मु समस्त को केही जणे भी एठी क्लियर कर देले हबो एनी वन ऑफ यू जे भी लाइव अछंती लाइव चैट रे टिके मते क्लियर कर दियंतु कि ऑडियो एंड वीडियो बोथ क्लियर अछि कि नहीं and after that I will simply assume कि video audio both clear अछि and मु class start करबी okay कहउछंती क्लियर अछि बोली सो एठी आपण देखि पारुथिबे गोटे कोर्स रिलेटेड गोटे इन्फॉर्मेशन अछि जोटा मु फर्स्ट शेयर कर दउची ओपीएससी ओएस 2026 फाउंडेशन बैच कोर्स एठी लॉन्च हेजी प्रिलिम्स मेंस इंटरव्यू कवरेज एथरे रहइबो एंड नुआ बैच जनवरी 2026 रु स्टार्ट हे सरची सो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ मोड रे एटा अवेलेबल अछि लिमिटेड सीट्स अछि एंड जॉइन करिवार थिले ए जो स्क्रीन रे दिया जाइथिबा ए नंबर रे जाइकी से माने कांटेक्ट करि परिबे एंड एडमिशन इज ओपन फॉर बोथ आईएएस एंड ओएस आई मीन यूपीएससी एंड ओपीएससी ठीक अछि तो एटा गोटे इंटीग्रेटेड फाउंडेशन कोर्स रहउची स्क्रीन रे दिया जाइथिबा नंबर रे जाइकी कांटेक्ट करिकी कोर्स अवेल करि परिबे एंड ता साथ ही साथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड होची एंड मेंटरशिप प्रोग्राम भी प्रोवाइड होची फॉर ओपीएससी ओसीएस 25-26 बैच पई की जोथरे आपण मानकर रहिबो 36 टा टोटल टेस्ट रहिबो जोथरे की बोथ जीएस एंड सीसैट कवर हबो ସେଥିରେ 26 ଟା जो 36 ରୁ फंडामेंटल कम अप्लाइड टेस्ट रहिबो 10 टा फुल लेंथ रहिबो हेगला 36 देन जो 36 टेस्ट आपण देबे ऑनलाइन की ऑफलाइन मोड रे भी हो तार डिस्कशन एंड डिटेल सॉल्यूशन भी आपण मान को प्रोवाइड हे जिवो जोटा कि बोथ ओडिया एंड इंग्लिश रे प्रोवाइड हबो पीवाईक्यू डिस्कशन क्लासेस भी एथिरे रहउची रिवीजन क्लासेस भी एंड आपण को वन ऑन वन मेंटरशिप रो प्रोविजन भी एथिरे प्रोवाइड होची फॉर मोर इंफॉर्मेशन स्क्रीन रे दिया जाइथिबा नंबर रे कांटेक्ट करिवे ऑप्शनल रिलेटेड भी एटी किसी इन्फॉर्मेशन मु शेयर करूची जेमति कि हमर ओडिया ऑप्शनल हैला फाउंडेशन बैच रे ओडिया ऑप्शनल कवर होची जो माने ओडिया ऑप्शनल रखुतिबे फॉर ओपीएससी एंड यूपीएससी बाय डॉक्टर बी के साहू सर जहां कर 26 प्लस इयर्स र टीचिंग एक्सपीरियंस अछि and admission is open limited 30 टा सीट अछि सो हरी अप सिलेबस कवरेज फुल सिलेबस कवरेज रहइबो वन ऑन वन मेंटरशिप प्रोवाइड हबो देन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपण एटी करि परिबे साथ ही साथ नोट्स मिलिबो रेलेवेंट मटेरियल्स मिलिबो एग्जाम पई देन होम साइंस ऑप्शनल एंड पीएसआईआर ऑप्शनल भी सिमिलरली अवेलेबल अछि जोटा रे कि भी आपण को सेही 30 टा सीट्स रहिबो लिमिटेड अछि सिलेबस कवरेज रहिबो वन ऑन वन मेंटरशिप सेम अछि सबुत्र सबु ऑप्शनल रो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिवे नोट्स एंड मटेरियल्स एंड ऑल सो एडमिशन इज ओपन नाउ ओके एबे हमें स्टार्ट करिबा एंड पर क्वेश्चन जेमति कि मु 10 टू 15 सेकंड्स टाइम दिए डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन सेटा आपण सॉल्व करिवे मते इठी लाइव चैट रे आंसर जणैबे देन हमें आंसर एंड एक्सप्लेनेशन हमें सेमति भी तो डिस्कशन करिबा बट मु एठी समस्त को एडवाइस करिबी कि जो मु टाइम ता देबी एठी पर क्वेश्चन एठी काहा को आसु न आसु समस्त एठी अटेम्प्ट करिवे एंड आंसर मते जणाइबे ओके सो क्वेश्चन नंबर 1 consider the following statements regarding Raja Raja first he conquered parts of Sri Lanka including Anuradhapura he built the Brihadishwara temple at Tanjore. He led the naval expedition against Sri Vijaya in 1025 CE. आ भितर तीनोटी जो स्टेटमेंट देला आ भितर केतोटी करेक्ट अच्छे ओके एठी सब बेले एठी नोटिस करबे एग्जाम देला बेले बहुत थर थाए कि करेक्ट एंड नॉट करेक्ट पिला माने नॉट बहुत थर स्किप कर जांती देन तांको आंसर ठीक जणा थिले भी स्टेटमेंट्स रो नॉलेज थिले भी ऑप्शन भूल करके आसती ओके सो बी केयरफुल ऑलवेज रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली ए बी सी डी आ भितर आंसर कौन हम मुझे 10 सेकंड्स दूसरी हिस्ट्री अच्छी फैक्चुअल क्वेश्चन अच्छी एंड एज यूजुअल जो फैक्चुअल क्वेश्चन थी आम जल्दी जल्दी डिस्कशन करके बढ़िया एंड जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व थी आम से टाइम नहीं कि से कॉन्सेप्ट को डिस्कस करवा गिव मी द आंसर नाउ
Answer is 10 second is over. Answer is A only. Statement 1 correct अछि राजा राजा 1 सीए एक्सपैंड करथिले चोल पावर को ओवरसीज एंड से नॉर्दर्न श्रीलंका को नॉर्दर्न श्रीलंका को कनकर करथिले इंक्लूडिंग कैपिटल जो अनुराधापुर अछि एठी एंड सी ए रीजन को एनेक्स करथिले एंड ताकू गोटे चोल प्रोविंस हिसाब रे ताकू बनैथिले देन स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट अछि सी बृहदेश्वर टेम्पल बिल्ड करथिले जोटा कि राजा राजेश्वरम भी कहा जाए at Tanjore around केबे 1010 CE and जोटा एटा गोटे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आ गोटे चोल आर्किटेक्चर मास्टरपीस कहिया को गले एटा सो स्टेटमेंट नंबर 3 टा इनकरेक्ट अछि काना जो नेवल एक्सपेडिशन थिला अगेंस्ट श्रीविजय इन 1025 CE सेटा वाज कंडक्टेड बाय राजेंद्र वन देखुछथि ना केते एठी सिमिलर लागुची राजेंद्र एठी अछि राजा राजा 1 नॉट राजा राजा 1 एटा हबो राजेंद्र 1 तो हमर आंसर एठी कोन हिजबो आंसर हबो ए 1 and 2 only second consider the following statements regarding rajendra 1 he shifted the capital from gangaikonda cholapuram he conducted a naval expedition against Srivijaya again ମୁଁ ଏଠି ଉପରେ थर्ड स्टेटमेंट रे एटा कहि सारलेनी तो एठी समस्त को हल्का आइडिया लागि जिबनी कि स्टेटमेंट नंबर 2 करेक्ट हबो कि इनकरेक्ट हबो से हिसाब रे आंसर देबे he defeated पुलिक्सिन 2 at Vatapi आंसर कोन हबो करेक्ट आंसर पचारची सो ମୁଁ एठी 10 सेकंड्स दोची 10 सेकंड स्टार्ट्स नाउ दीपांजलि सिन्हांकर आंसर ए थला ओके ट्राई करंतु टिके 10 सेकंड्स भितरे दबाको ओके सो क्वेश्चन नंबर 2 रा स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट अछि राजेंद्र 1 से एस्टैब्लिश करथिले तांकर जो नुवा कैपिटल द गंगाईकोंडा चोलपुरम आफ्टर हिज विक्टोरियस नॉर्दर्न कैंपेन अप टू द गंगा ठीक अछि आ ए नार लिटरली मीनिंग ही होची कि द सिटी ऑफ द चोला who conquered the Ganga. Okay. तो एटा करेक्ट अछि स्टेटमेंट नंबर 2 भी करेक्ट अछि ही लेड द फेमस नेवल एक्सपेडिशन अगेंस्ट श्रीविजय जोटा 1025 CE ऊपर मु कहिछि डेमोन्स्ट्रेटिंग चोला मैरीटाइम डोमिनेंस इन साउथ ईस्ट एशिया सो दिस इज आल्सो करेक्ट स्टेटमेंट 3 एटा एक्चुअली इनकरेक्ट एंड जो पुलिक्सन 2 थिले सी ही वाज डिफीटेड एट वातापी बाय नरसिम्हा वर्मन ऑफ पल्लवस he didn't defeat narasimha वर्मन फर्स्ट ऑफ पल्लवस तांको द्वारा डिफीट हेतले नॉट राजेंद्र वन आ जो इवेंट ता हेतला सेटा 7th सेंचुरी हेतला लॉन्ग बिफोर द चोलास next consider the following statements regarding chola administration village assemblies such as sabha and ur played a key administrative role Uttaramerur inscription provides details about local self-governance. Land revenue was generally fixed at 1/3 of the produce. Correct kona achi? Answer of B 1 and 2. Statement 1 correct अछि जो village self government थिला it was highly developed assemblies रे जेमति कि थिले सभा थिले then हमर उर थिले and कोन थिला नगरम सभा होची कोन सभा होची ब्राह्मण villages and जो उर होची non brahmin villages एटा होची ब्राह्मण एटा होची नॉन ब्राह्मण villages and जो नगरम थिला एटा होची merchant towns these bodies handled taxation irrigation justice and administration
Statement number 2, Uttara Merur inscription provide details about local self governance. ठीक अच्छी कहीं ना एमाने डिटेल इलेक्शन रूल्स हैला लोकल काउंसिल्स हैला जेमति कि क्वालिफाई के माने करिवे को माने डिस्क्वालिफाई करिवे वोटिंग प्रोसीजर्स हैला एटा एथरे डिटेल्स गुडा को प्रोवाइड हेछि दे आर की एविडेंस ऑफ अर्ली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सो स्टेटमेंट नंबर 2 इज आल्सो करेक्ट स्टेटमेंट नंबर 3 एक्चुअली इनकरेक्ट अछि काना लैंड रेवेन्यू जो थिला सेटा सेतबळे फिक्स्ड यूनिफॉर्मली नथिला नॉट फिक्स्ड यूनिफॉर्मली जोटा कि एटी कहिला कि 1/3 रे सेटा फिक्स थिला कि गोटे यूनिफॉर्म रेट फिक्स थिला एक्चुअली सेटा वेरी करूथला डिपेंडिंग ऑन सॉइल क्वालिटी कोन रहिला क्रॉप कोन रहिला इरिगेशन रीजन ए सब रे वेरी करूथला से चोला टैक्सेशन वाज सिस्टमैटिक किंतु सेटा फ्लेक्सिबल थिला सो हमर आंसर कोन हेजबो आंसर बा बी 1 and 2 कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स डायनास्टी देछि देन मॉन्यूमेंट एंड फीचर्स देछि पल्लव देछि मलप्पुरम रथस राष्ट्रकूटस होछि कैलाश टेंपल एट एलोरा होयसला होछि शोर टेंपल्स 4 आंसर अब बी ओनली 2 एबे को दिटा हमें देखिबा फर्स्ट पेयर होची पल्लव सहित पेयर करा जे मलप्पुरम रथ एटा करेक्ट अछि कारण जो पंच रथ रहिले मलप्पुरम रो पंच रथ एट मलप्पुरम सेटा बिल्ड हेतला पल्लव पीरियड रे स्पेशली ड्यूरिंग नरसिंह वर्मन फर्स्ट एंड तांकर जो सक्सेसर माने थिले तांको पई सेगुडी कोन थिला सेगुडी थिला मोनोलिथिक एंड रॉक कट पेयर 2 भी करेक्ट अछि राष्ट्रकूट को संगे पेयर करा जे कैलाश टेंपल एट एलोरा सेटा करेक्ट अछि कैलाश टेंपल जोटा रहिला इट वाज कमिशन बाय राष्ट्रकूट किंग किए कृष्णा फर्स्ट 8th century सी एटा गोटे रॉक कट आर्किटेक्चर मार्बल कार्व फ्रॉम अ सिंगल रॉक पेयर 3 इज एक्चुअली इनकरेक्ट होयसाला को शोर टेंपल सहित पेयर करा जायछि एक्चुअली जो शोर टेंपल थिला इट वाज बिल्ड बाय द पल्लवस Pallavas are correct answer, not Hoysalas. Okay, Hoysalas are instead known for their star-shaped temples. এটা note করতে হবে star-shaped. They are known for this. ତାଙ୍କର star-shaped temple ଥିଲା ତାଙ୍କର identity. Like Bellur ହେଲା Halebidu. Okay. Next, consider the following statements regarding the tripartite struggle. It was fought for control over Kannauj. It involved the Gurjara Pratiharas, Palas and the Rashtrakutas. It directly involved the Cholas of the South India. Abidru ketoti statement correct achi. स्टेटमेंट 1 कहला कि स्टेटमेंट 1 इज एक्चुअली करेक्ट ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल जो हेतिला सेटा कनौज पई कि हेतिला जोटा कि गोटे प्रेस्टिजियस पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक सेंटर थिला इन अर्ली मेडिवल इंडिया सो दिस इज करेक्ट इट इन्वॉल्व द गुर्जर प्रतिहारस पाळस एंड द राष्ट्रकूटस आल्सो करेक्ट कने तीनिटा पावर एथरे इन्वॉल्व थिले ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल गुर्जर प्रतिहार थिले एंड गुर्जर प्रतिहार कोड थिले नॉर्थ वेस्ट इंडिया रे थिले एंड पाळस ईस्टर्न इंडिया एंड राष्ट्रकूटस थिले डेक्कन रे ओके Statement 3 is incorrect. जो चोला थिले साउथ इंडिया रे they did not participate. It directly involved cholas देला तो so they did not participate actually. तांकर जो राइज हेई थिला चोला पावर रे
it occurred much later and mainly से माने southern ଆଉ maritime expansion उपरे से माने concern थिले concentrate करुथिले. Okay. Next, consider the following statements regarding Muhammad of Ghazni. He conducted 17 raids into India. His raid on Somnath took place in 1025 CE. He established permanent rule over South India. Correct कौन होगा? Statement 1 is correct. Actually, Mahmud of Ghazni से traditionally कहिए को बोले से 17टा raid conduct करिथिले into India between 1000 to 1027 CE जोटा कि गोटे commonly accepted exam fact. Okay, so एटा गोटे मने रखिबे. And statement 2 भी correct अछि. तांकर जो famous raid थिला on the Somnath temple सेटा 1025 CE रे हेइथिला, which where he looted wealth से loot करथिले, then and returned to Ghazni. Statement 3 is incorrect कहने से केबे भी establish करनथले permanent rule in South India जोटा कि एठी देला कि से permanent rule गोटे establish करथिले, से केबे भी permanent rule establish करनथले South India रे. In fact से केबे he never ruled actually any part of South India at all. So एटा गोटे extreme statement हे होछि and completely wrong. तांकर जो campaigns थिला से गुडी को mostly raids थिला for plunder, not territorial annexation. Okay. Our answer कौन हबो ताले 1 and 2 only. Consider the following statements regarding Muhammad bin Qasim. He conquered Sindh in 712 CE. He defeated Dahir at the battle of, just a second, Rawar. His campaign resulted in permanent Muslim control over the Deccan. कितना ठीक अछि statement. स्टेटमेंट 1 कहले सेटा करेक्ट अछि. मोहम्मद बिन कासिम जो थिले से इन्वेड करिथिले एंड कनकर करिथिले सिंध को 712 सीई रे. दिस इज अ फैक्ट जोटा कि करेक्ट अछि. देन स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट अछि. से राजा दहिर को डिफीट करिथिले एट द बैटल ऑफ रवार. ओके, which led to the fall of Brahman rule in Sindh. Statement 3 is actually incorrect. काइना तांकर जो campaign थिला did not establish permanent Muslim rule. तो एठी कोन कहला कि permanent Muslim control. So permanent Muslim rules establish करि नथिले over the Deccan. तांकर जो control थिला सेटा बहुत limited थिला and mainly to Sindh थिला. Mainly to Sindh and parts of Multan. Parts of Multan. जो डेक्कन थिला सेटा इंडियन डायनास्टीज का अंडर रे थिला. इट रिमेन्ड अंडर देम फॉर सेंचुरीज आफ्टरवर्ड. ओके, क्वेश्चन नंबर 8. Consider the following statements regarding the Ghurid invasions. Muhammad Ghori was defeated in the first battle of Taran. In the second battle of Taran, Prithviraj Chauhan defeated Ghori. Qutbuddin Aibak later established the Delhi Sultanate. ओके, तो स्टेटमेंट 1 एटी करेक्ट अछि. मोहम्मद घोरी जे थिले से ही वाज डिफीटेड इन द फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन. केबे हेतिला? बाय पृथ्वीराज चौहान. एंड जो सेकंड बैटल ऑफ टेरेन थिला जोटा कि 1192 रे हेतिला. रिजल्ट वाज रिवर्स्ड एक्चुअली. ओके, तो एटा स्टेटमेंट 2 टा इनकरेक्ट हबो. मोहम्मद घोरी सीए डिफीट करथिले पृथ्वीराज चौहान को सेकंड बैटल रे एंड ए जो विक्ट्री थिला इट ओपन नॉर्थ इंडिया टू टर्किश रूल. सो एटी हमर 2 कैंसिल हे गला. तो ए दिटा ऑप्शन गला. 1 तो करेक्ट अछि. देन 3 देखिबा. कुतुबुद्दीन ऐबक लेटर एस्टैब्लिश द दिल्ली सल्तनत. एटा करेक्ट अछि. घोरी कर जनरल जो थिले कुतुबुद्दीन ऐबक, लेटर ही एस्टैब्लिश द दिल्ली सल्तनत इन 6 आफ्टर घोरीज डेथ. हमर आंसर कोन हबो? आंसर हबो 1 and 3.
Consider the following statements regarding the Hoysala architecture. It extensively used soapstone. Temples often had stellate star-shaped plans. Star-shaped plans upare gote question already jaichi. So recall that. The Ramappa temple is a Hoysala monument. Abhidru ketari statement correct achi. 10 seconds starts now. Statement 1 actually correct. Hoysala temple they used soapstone jahaku ame chloritic schist भी କହିଥାଉ. Chloritic schist जोटा बहुत ही सॉफ्ट ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେରି ହେଇଥାଏ and ପଛରେ ସେଟା hard ହୁଏ, it hardens later allowing intricate carvings. Then statement number 2 भी correct ଅଛି. Hoysala temple ତାଙ୍କର star shaped ground plans ଥାଏ. ଉପରେ ଗୋଟେ question ରେ already discuss ହେଇଛି କି ତାଙ୍କର star shaped ground plans ପାଇଁ କି ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ unique feature. ଗୋଟେ hallmark feature ଏଟା seen in temples like Belur or Halebidu ଉପରେ example ରେ ବି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ. Statement 3 incorrect ଅଛି. Ramappa temple ସେଟା କାକତିୟ dynasty built କରିଥିଲେ. Kakatiya dynasty, not the Hoysalas. It is located in the present day Telangana. Okay. Next. 10. Question number 10. Consider the following statements regarding the Pandya kingdom. Capital thila tankara Madurai. It was known for pearl fisheries and gem trade. Permanently ended Chola power in 10th century. Ketara statement correct achi? Out thare samaste eti statement bhalse padh diyantu. Options next page re achi. I will scroll down. Capital thila Madurai re. ତାଙ୍କର ପର୍ଲ ଫିଶରିଜ ଆଉ ଜେମ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ଜଣାଯାଉଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଚୋଳ ପାୱାରକୁ ସେମାନେ ଏଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଇନ୍ ଦ 10th ସେଞ୍ଚୁରୀ. So statement 1 is correct. Capital thila tankara Madurai, one of the oldest continuously inhabited cities of South India and gote cultural center भी. Statement 2 भी correct अच्छी कहना जो पंड्यास माने थिले से माने pearl fisheries और gem trade ପାଇଁ famous थिले. Statement 3 is actually incorrect. They did not permanently end the Chola power in the 10th century. In fact जो Chola ତାଙ୍କର peak power କୁ rise କରିଥିଲେ in the 10th and 11th century. So ଏटा ଗୋଟେ absolutely incorrect statement. Our answer कौन हबो? Answer will be 1 and 2. Option number A. Question number 11. Consider the following statements regarding Chola maritime expansion. Chola maintained a powerful navy. They captured the Maldives. The maritime expeditions disrupted trade with Southeast Asia permanently.
स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट कहना तांको पाखरे गोटे पावरफुल नेवी थिला जे कि ओवरसीज एक्सपेडिशन से माने जो करूथिले सेटा सेति कि तांको एनेबल करूथला काहेकि ना तांको पाखरे पावरफुल नेवी थिला एंड कंट्रोल ऑफ मैरीटाइम ट्रेड रूट्स. स्टेटमेंट नंबर 2 इज आल्सो करेक्ट. दे कैप्चर द मालदीव्स ड्यूरिंग देयर naval campaigns, showing their dominance in the Indian Ocean. Statement 3 is actually incorrect. Kaina tanko jo expedition thila, it did not permanently disrupt the Southeast Asian trade. एटा जदि स्टेटमेंट को देखिबे कि एठी कहिछि कि परमानेंटली डिसरप्ट कर देला मैरीटाइम एक्सपेडिशन तांकर साउथ ईस्ट एशिया ट्रेड को. तो एटा गोटे काइंड ऑफ एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी हेइ होछि. सो ट्रेड एक्चुअली रिज्यूम हेइतिला एंड कंटिन्यू भी हेइतिला. तांकर जो एक्सपेडिशन थिला it was meant to assert dominance, not destroy the commerce. So it was meant for dominance. Okay. So 11 ro kon hobo answer 1 and 2. Consider the following statements regarding cultural contributions of South Indian dynasties. Amogha Varsha authored Kavi Raja Marga in Kannada. Narasimha Varman first patronized rock cut architecture at Malappuram. The Brihadishwara temple represents early Nagara style architecture. Statement 1 is correct. Amogha Varsha first say authored करथिले कविराज मार्ग. एटा होची गोटे अर्लीस्ट नोन लिटरेरी वर्क इन कन्नड़. In what? In which language? Kannada. And eta gote landmark in Indian literary history. Statement 2 be correct achi. Narasimha Varman first patronized the rock cut architecture at Malappuram, including jo monolithic ratha hela, cave temples hela, etc. Statement 3 is incorrect. And jo Brihadishwara temple thela ame upare discuss kariche. It represents the Dravida style. Dravida style architecture, not Nagara style. Nagara hochi actually North Indian temple style re seta jae जोटा कि गोटे curvilinear शिखर सेतरे थाए. Nagara style North Indian. Okay, and Dravida hochi South Indian. South Indian pyramidal vimana थाए तारो जेमति कि Brihadishwara temple रो. So answer होबो 1 and 2 only. Consider the following statements regarding unemployment trends in India. Urban unemployment rate is higher than the rural unemployment rate. Youth unemployment, youth जोटा कि 15 to 29 years में नौजे is more than double the overall unemployment rate. Female unemployment rate in urban areas is lower than that of males. Answer कौन होगा? Okay, option होची correct पचारची and here are the options. So statement 1 correct अछि. Generally जो urban unemployment थाए सेटा higher थाए rural थारु कहीं ना जो urban labor market रहिला से माने बेसी formal job ऊपर बेसी depend करंती and skill matching सेटी गोटे condition थाए. So urban unemployment ता normally टिके urban unemployment अधिका थाए rural unemployment थारु. कारण मु एबे कहली. Then जो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट अछि. यूथ अनएम्प्लॉयमेंट माने यूथ जो मान को 15 to 29 इयर्स में नहीं था से माने यूजुअली मोर देन डबल अछंदी द ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू स्किल मिसमैच एंड जस्ट अ सेकंड स्किल मिसमैच एंड जॉब मार्केट एंट्री बैरियर्स. ओके तो स्टेटमेंट 2 भी हमर करेक्ट हला. स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट अछि. जो अर्बन फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट हला सेटा यूजुअली अर्बन फीमेल unemployment सेटा होची usually higher than males, not lower. But option रे lower कहितला. Women they face जेमति कि ताकर social norms हला, peer pressure हला, mobility constraint केथि सेठी जाई परिबेनी and fewer opportunities तांका पई की. So this is female unemployment is usually higher than males. Consider the following statements regarding disguised unemployment.
It is commonly observed in the agriculture sector. It implies that marginal productivity of labor is zero. It is reflected in the high contribution of agriculture to GDP. 10 seconds starts now. जो मैंने 13 रो ए आंसर देइछंती दीपांजलि सिन्हा. I hope I'm pronouncing her name right. Correct answer. Very good. Disguised unemployment रो जो तीनोटी स्टेटमेंट एटी फ्रेम हेजी सेतर फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट अछि. डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होजी मोस्ट कॉमन एग्रीकल्चर सेक्टर रे. ओके स्पेशली इन डेवलपिंग इकोनॉमी. सो डेटा करेक्ट अछि. आ माने होजी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर होजी जीरो. जोटा कि एटी स्टेटमेंट रे कहिछि. रिमूविंग सम वर्कर्स डज नॉट रिड्यूस द आउटपुट. सो दिस इज करेक्ट. इट इज रिफ्लेक्टेड इन हाई कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू जीडीपी. इनकरेक्ट अछि काना एटा इट इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन हाई एग्रीकल्चरल जीडीपी शेयर. इनफैक्ट जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमर रहला एटा एग्जिस्ट करूछि जोटी कि एग्रीकल्चर एम्प्लॉयज many workers but contributes little to GDP. So no high contribution. Okay. Question number 15. Structural unemployment in India is primarily associated with automation replacing routine jobs, mismatch between educational output and industry demand, seasonal fluctuations in agricultural production. Statement 1 is correct. Automation routine jobs को replace करूची and create structural unemployment. कहीं ना जो technology रहिला it permanently changes the labor demand. So automation replacing the routine jobs and creating structural unemployment. Right? Then second, structural unemployment होची strongly linked to skill mismatch. ସେଇଥିପାଇଁ ତ automation की technology ତାକୁ replace କରିପାରୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ. So it is the skill mismatch between education and industry needs. ସେମାନେ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କୁ ସ୍କିଲ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କର capacity building ହଉଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କୁ educate କରାଯାଉଛି, ସେଟା industry standard ସହିତ match କରୁନି. So ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ employ କରୁନାହାନ୍ତି. This is also correct. Seasonal fluctuation in agriculture cause seasonal unemployment. Seasonal fluctuation in agriculture production. It is seasonal unemployment, not structural unemployment. So it is incorrect. Answer about 1 and 2 only. Okay. Next. Question number 16. Consider the following statements regarding the PLFS. It is conducted by the Ministry of Statistics and Program Implementation. It provides quarterly urban unemployment data. It measures unemployment as a percentage of total population. Abhi through ketati correct achi? Two and three achi, then 1, 2, 3 achi. Iti mu lekhi dauchi. Just a second. 2 and 3, then D hochi 1, 2 and 3. Okay.
स्टेटमेंट 1 करेक्ट अच्छी एटा को मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ही कंडक्ट कराए द PLFS थ्रू द NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस. स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट अच्छी PLFS क्वार्टरली अनएम्प्लॉयमेंट एस्टिमेट प्रोवाइड करे फॉर व्हाट फॉर अर्बन एरियाज एंड एनुअल एस्टिमेट प्रोवाइड करे बोथ क्वार्टरली प्रोवाइड करे अर्बन पाई की एंड एनुअली प्रोवाइड करे बोथ रूरल एंड अर्बन पाई की. देन स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट अच्छी अनएम्प्लॉयमेंट रेट एटा को मेजर करा जाए गोटे लेबर फोर्स रो परसेंटेज हिसाब रे नॉट टोटल पॉपुलेशन. ओके सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट रो एठी जदी टिके आपण फार्मूला देखिबे अनएम्प्लॉयमेंट रेट इक्वल्स टू अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स इनटू 100. ओके आंसर हमर कोन हबो आंसर हबो बी 1 and 2 only. Which of the following factors contribute to jobless growth in India? Capital intensive industrial expansion, high share of service sector in GDP, rapid growth of MSME employment. Statement 1 is correct. कैपिटल इंटेंसिव ग्रोथ जो है से माने कौन करिवे मशीन को यूज करिवे बेसी कैपिटल इंटेंसिव से माने रादर देन लेबर एते से माने यूज करिवे ने बेसी मशीन्स यूज करिवे सो द आउटपुट राइजेस बट जॉब्स डू नॉट एटा एक्चुअली करेक्ट अछि कि आउटपुट बढ़िबो किंतु जॉब बढ़िबोनी काइना से माने बेसी रो बेसी मेकानाइज्ड मशीन्स यूज करूछंती. स्टेटमेंट 2 करेक्ट अछि जो हाई शेयर रहिला सर्विसेज इन जीडीपी इट कैन कंट्रीब्यूट बिकॉज़ मेनी सर्विस सेक्टर्स जेमति आईटी हैला फाइनेंस हैला दे आर स्किल इंटेंसिव एंड एम्प्लॉय फ्यूअर पीपल. So this is also correct. Statement 3 incorrect अच्छी जो rapid MSME employment रहिला they would actually reduce the jobless growth not cause it. So this is incorrect. So B 1 and 2. Consider the following statements regarding LFPR in India. Female LFPR it has shown improvement in recent years. Urban female LFPR it has significantly higher than rural female LFPR. LFPR represents the proportion of working age population willing to able to work. Which of the above is correct? LFPR माने होची labor force participation rate. स्टेटमेंट 1 करेक्ट अछि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जोडा एलएफपीआर रहिला इंडिया रे सेटा इंप्रूवमेंट एबे शो करछि रिसेंट इयर्स रे स्पेशली जो रूरल फीमेल माने रहिले से माने पार्टिसिपेट करूछंदी ड्यू टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एग्रीकल्चर सो एटा करेक्ट हबो. सेकंड अर्बन फीमेल एलएफपीआर सेटा लो रहिछि देन रूरल नॉट हायर रूरल वुमेन माने जो माने वर्क करूछंदी इन एग्रीकल्चर और इनफॉर्मल सेक्टर्स सो अर्बन फीमेल एलएफपीआर is lower than rural. It is not higher. LFPR represents the proportion of working age population willing and able to work. LFPR होची जो working age population हमरे रहिले ता भितरु केते proportion जो माने चाहुचंती and से माने able भी काम करिवाकू and एथरे को माने जाउचंदी employment plus unemployment जो माने रहिले but they are seeking वर्क से माने वर्क खोजुचंती तो एथिरे से माने जिबे. स्टेटमेंट 3 करेक्ट अछि आंसर अब 1 and 3. Seasonal unemployment in India is most closely associated with automation in manufacturing, monsoon dependent agriculture, gig economy, artificial intelligence adoption. आंसर अब B monsoon dependent agriculture. Seasonal unemployment काफी बार हमें ऊपर ताको डिस्कस करि सरलेनी. सीजनल एम्प्लॉयमेंट सेतबळे हुए जेतबळे कि जो एम्प्लॉयमेंट थाए सेटा ओनली गोटे पर्टिकुलर सीजन रे ही अवेलेबल हुए पूरा वर्ष सारा सेटा अवेलेबल न थाए एंड इंडिया रे एटा मेनली ड्यू टू मॉनसून डिपेंडेंट एग्रीकल्चर हमर एग्रीकल्चर टा मॉनसून डिपेंडेंट जेहेतु सेतबळे जो लेबर डिमांड थाए सेटा राइज करे ड्यूरिंग जेमति कि जेतबळे बुणा बुणी हबो मंजी ड्यूरिंग सोइंग हार्वेस्टिंग एंड जेतबळे ऑफ सीजन चले जेतबळे हार्वेस्ट हेई सारे सेटा फॉल करि जाय सो associated with monsoon dependent agriculture. 20 consider the following statements regarding
educated unemployment. Graduate unemployment rate is higher than the overall unemployment rate. It is primarily a rural phenomenon. It reflects quality mismatch in higher education. Correct kon haba? The options are here. So statement 1 amar correct haba. जो graduate unemployment rate रहिला सेटा overall unemployment थारु अधिका काइना educated youth से माने specific job खोजंती low skill work को से माने reject कर दे पारंती. So it is higher generally. Statement 2 is incorrect काइना एटा primarily rural नुहे जोटा कहि देला कि एटा primarily rural करिकी it is more visible in urban areas जोटी कि educated youth reside करंती and formal employment से माने चाहंती. स्टेटमेंट 3 करेक्ट अछि एटा रिफ्लेक्ट करे गोटे क्वालिटी मिसमैच इन हायर एजुकेशन की कोन तांको पाठ पढ़ा जाउची को स्किल तांको दिया जाउची एंड जो डिग्री से माने पाउचदी सेटा इंडस्ट्री स्किल्स इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सहित सेटा मैच करूनी सो देयर इज अ मिसमैच विद द इंडस्ट्री स्किल रिक्वायरमेंट्स. आंसर हमर हबो 1 and 3. Which of the following programs primarily aim at the rural wage unemployment generation? Manrega, PMEGP, NRLM. Rural wage employment programs. Answer habo 1 only. Kaina Manrega habo kaina ye guarantees particular days पाई wage employment पाई जो rural households माने wage पाइबे एतिकी दिन employment सेटा समस्त जानी थिबे direct wage employment एटा गोटे direct wage employment. Statement 2 incorrect अछि काना PMEGP जोटा रहिला सेटा it promotes the self employment through the loans or subsidies not wage jobs. Statement 3 is incorrect also काइना जो NRLM रहिला National Rural Livelihood Mission सेटा self help groups and ऊपर focus करे and livelihoods not wage employment. Question number 22. Consider the following statements regarding PLI scheme. It aims to increase manufacturing share in the GDP. It targets 14 sectors. It directly guarantees employment to all registered firms. PLI scheme, product linked incentive scheme. तार एम होची कि मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट केमती बूस्ट हबो एंड तार जीडीपी रे शेयर केमती बढ़िबो सो एटा करेक्ट अछि. 14टा सेक्टर से टारगेट करे जेमती कि इलेक्ट्रॉनिक्स हे गला हमर फार्मा टेलीकम्युनिकेशंस ऑटोमोबाइल्स टेक्सटाइल एटसेट्रा एटा भी करेक्ट अछि. मन रखिबे 14टा सेक्टर को पीएलआई स्कीम टारगेट करे एंड हे परिबो जदी से 14टा सेक्टर रे को सेक्टर पूरा 14टा को जस्ट मग इट अप. Statement 3 is incorrect. It does not guarantee employment. Eta gote incentive based product on production performance. Eta job creation kichi job creation ete indirect etre konosi guaranteed employment diya jaye nahi. So answer kon habo? Answer habo 1 and 2. High unemployment among youth can potentially lead to demographic dividend turning into demographic liability, increase in social unrest, higher fiscal burden due to welfare spending. Correct kon habo?
स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। जदि यूथ माने अनएम्प्लॉयड रहिबे ताहले डेमोग्राफिक डिविडेंड गोटे डेमोग्राफिक लायबिलिटी हिसाब रे कन्वर्ट हेजिवो। इंक्रीज इन सोशल अनरेस्ट बढ़िबो, जदि क्राइम प्रोटेस्ट इंस्टेबिलिटी एगुडा सब बढ़िबो। गवर्नमेंट मे नीड मोर वेलफेयर स्पेंडिंग, कहीं अनरेस्ट बढ़िबो, लायबिलिटी बढ़िबो, सो गवर्नमेंट कौन करिबो वेलफेयर ऊपर अधिक रु अधिक स्पेंड करिबो। सो जेतेबेले अधिक स्पेंड बढ़ी स्पेंडिंग बढ़िबो गवर्नमेंट रो, तो गवर्नमेंट ऊपर फिस्कल बर्डन भी सेतिकी बढ़िबो। सो डी 1 2 एंड 3। Okay, consider the following statements regarding the CMIE data. CMIE data उपरे तीनटा दुईटा स्टेटमेंट अच्छी। एटा गोटे प्राइवेट सोर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एस्टिमेट कहिला। देन सेकंड स्टेटमेंट होची इट ऑफन रिपोर्ट्स स्लाइटली हायर अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स देन द PLFS. Which of the above are correct? Both 1 and 2 actually correct. CMIE रो full form कौन? Center for Monitoring Indian Economy. CMIE एटा गोटे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जोटा कि इंडिपेंडेंट अनएम्प्लॉयमेंट एस्टिमेट को प्रोड्यूस करे थ्रू इट्स कंज्यूमर पिरामिड हाउसहोल्ड सर्वे। थ्रू व्हाट? कंज्यूमर पिरामिड हाउसहोल्ड सर्वे। ओके, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट हेगला। CMIE रो जो एस्टिमेट थाए से गुडी को स्लाइटली हायर थाए। दे शो स्लाइटली हायर अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट जोटा कि PLFS ठारू टिके अलगा स्लाइटली हाई रेट्स, मेनली बिकॉज दीटा जाकर जो मेथड रहिला सेटा डिफरेंट। कहीं जो PLFS रहिला सी कौन करती ऑफिशियल सर्वे करती डिफरेंट सैम्पलिंग और डेफिनेशन तांकर थाए। एंड CMIE जो रहिले ताकर हाई फ्रिक्वेंसी पैनल सर्वे थाए। ओके, सो टिके मिसमैच देखा जाए। आंसर इज सी, बोथ 1 and 2. Which of the following best explains the frictional unemployment? Technological redundancy, transition between jobs, agriculture surplus labor, economic recession. आंसर हम बी, ट्रांजिशन बिटवीन जॉब्स। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड माने होची आर डेटा केतबेले हुए जेतबेले वर्कर्स माने कोन करथांदी से माने टेम्पररीली अनएम्प्लॉयड थांदी। सो गोटे जॉब रु आ गोटे जॉब को जो ट्रांजिशन रहिला तो ए जो पीरियड टा रहिला सेठी से माने कोन हेले टेम्पररीली अनएम्प्लॉयड रहिले व्हाइल चेंजिंग जॉब्स, एंटरिंग वर्कफोर्स और सर्चिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज। एटा नेचुरल एंड इवन हेल्दी डायनामिक इकोनॉमी रे। सो जो टेक्नोलॉजिकल रिडंडेंसी रहिला एटा को एटा जाय कोथरे एटा होची स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट रे जाए। देन एग्रीकल्चरल सरप्लस लेबर टा हमर आमे देखिले कि डिसगाइज्ड रे जाउची।
and economic recession eta to cyclical unemployment. Okay, then manufacturing in India upare statements achi. Manufacturing contributes around 15% to GDP. China ro manufacturing share hoji India tharu significantly higher. Manufacturing expansion automatically eliminates disguised unemployment. Statement 1 is correct. Manufacturing contributes roughly 15 to 17%. Data ta correct achi. Around 15 to 17% of what? India's GDP. Statement 2 be correct. China ro manufacturing much higher. So statement 3 incorrect achi. Kind of manufacturing expansion, it does not automatically eliminate disguised unemployment. Workers semanako skill darkar, mobility darkar to shift from agriculture to industry. Answer about 1 and 2. Consider the following statements regarding labor reforms. Read the statements and answer in 10 seconds. 10 to 15 seconds. ଟିକେ lengthy ଅଛି. India consolidated labor laws into 4 labor codes in 2020. Code aim hochi to introduce flexibility in hiring and compliance. All states have fully implemented the codes uniformly. Statement 1 correct अछि. India जो तार जो 29 टा लेबर लॉस थिला ताकू कोडिफाई करिकी 4टा लेबर कोड कर देछि. एंड 4टा लेबर कोड कोन? फर्स्ट होछि कोड ऑन wages, then industrial relations code, then social security code, आ गोटे रहिला occupational safety, health and working conditions code. स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट अछि. तार एम होछि कि केमती कॉम्प्लायंस को सिंप्लीफाई करा जिवो, लेबर मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करा जिवो व्हाइल एंश्योरिंग द वर्कर प्रोटेक्शन. Statement 3 is incorrect. All states have not fully implemented them uniformly. Labor होछि गोटे concurrent list subject. Remember, labor as a co-list under a concurrent list subject under it. So rules vary state by state, and many are still in implementation phase. Okay. Answer number 1 and 2. Consider the following statements regarding Indian citizenship. The Constitution provides for dual citizenship at the union and the state levels. Parliament is empowered to regulate the citizenship by law. Overseas citizen of India status is equivalent to full Indian citizenship. Consider the following statements regarding Indian citizenship. So, statement 1 incorrect अछि. India dual citizenship provide करेनी. समझ जानथिबे single citizenship unlike USA. USA रे कोन थाए dual citizenship थाए. So, एटा incorrect अछि. Then statement 2 correct अछि. Parliament पाकरे power अछि to regulate citizenship under article what?
under Article 11 of the Constitution. So this is correct. Overseas citizen of India जो OCI status टा रहिला is not full citizenship. Overseas citizen of India ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେନି, ସେମାନେ ଭୋଟ୍ କରିପାରିବେନି, ସେମାନେ constitutional post ରେ କିଛି ସେମାନେ ରହିପାରିବେନି और ସେମାନେ agricultural land ବି buy କରିପାରିବେନି ଇଣ୍ଡିଆରେ. So ଏଟା ବି incorrect ହେଇଗଲା. ଆମର ହବ A 2 only. With reference to Article 5 of the Constitution, consider the following conditions. Domicile in India, birth in India, residence in India for at least 5 years preceding 26 January 1950. Article 5 हिसाब रे Article 5 होची कोन under Article 5 citizenship at the commencement of the Constitution. Commencement of the Constitution. ତିନିଟା ଜିନିଷ ଦରକାର. ଫର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି କି ପର୍ସନଟି ସେ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ଡୋମିସାଇଲ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ହି ଅର୍ ସି, ତାର ବର୍ଥ ହେଇଥିବ ଇଣ୍ଡିଆରେ ୱାଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ କଣ୍ଡିସନ୍, ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭଲି ରେସିଡେନ୍ସଟା ତାର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛି ତାର ରହିବା ଟାଇମ୍ଟା ଫର୍ 5 ଇୟର୍ସ, 5 ବର୍ଷ ରହୁଥିବ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ପ୍ରେସିଡିଂ 26 ଜାନ୍ 1950. ଓକେ, ସୋ ଏମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେବେ. So Article 5 रो फॉर्मूला एमती देखिया गले कि डोमिसाइल प्लस बर्थ और parentage और 5 year residence. Okay, answer about C 1 2 3. Consider the following statements regarding loss of Indian citizenship. Acquisition of foreign citizenship automatically leads to termination. Deprivation can occur on grounds of disloyalty. Renunciation is applicable only to naturalized citizens. Correct कौन हबो? Statement 1 correct हबो कहना जो foreign citizenship रो जो acquisition रहिला it lead to automatic termination of Indian citizenship, and eta कोथरे अछि Citizenship Act of 1955. So this is correct. Deprivation government order करी पारे deprivation of citizenship for reasons such as जेमति disloyalty हेगला, fraud हेला, excuse me, or aiding enemy. Renunciation is applicable only to naturalized citizens. Renunciation any citizen समस्त ପାଇଁ କି applicable, ସବୁ citizen ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି, କେବଳ naturalized ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ନୁହଁ, କାହିଁକି ନା any adult Indian citizen ସେମାନେ voluntarily renounce କରିପାରିବେ ତାଙ୍କର citizenship. So ଏଟାର answer ହେବ 1 and 2. Consider the following statements regarding Article 14. First statement कहला कि it prohibits class legislation but permits reasonable classification. Reasonable classification requires intelligible differentia and rational nexus. It applies only to citizens of India. Okay, iti mu 10 seconds douchi. So statement 1 is correct. Obviously Article 14 सेटा class legislation prohibit करे, जेमति कि arbitrary discrimination हैला किंतु reasonable classification से allow करे. Statement 2 भी correct अछि. Court किछिटा criteria से माने देई चंती to test reasonable classification, जेमति कि गोटे हैला intelligible differentia, माने होची classification must distinguish groups logically. Then आउ गोटे होची rational nexus, classification must relate to the law's objective. Statement 3 एटी भूल अछि, काना एटी कहला कि it applies only to citizen of India. नाइ, it applies to all the persons, not only citizens. माने एटी foreigners and legal persons को ऊपर भी एटा applicable.
Which of the following fundamental rights are available only to citizens? Freedom of speech and expression, equality before law, freedom to form associations. Sorry. Rights available only to citizen. Freedom of speech and expression mu कहली एटा correct अछि काना article 19 एटा होची freedom are available only to citizen एतरे. Okay. एटा होची article 19 रे गला. Then equality before law. Equality before law actually it incorrect achi. Article 14 it applies to all the persons. ऊपर गोटे question हमें discuss कले including the foreigner. So this is incorrect. तो इटा कले दीटा option हमर गला. Freedom to form the associations इटा correct achi and it comes under Article 19 clause 1 subclause C is restricted to citizen only. The answer about B 1 and 3. Consider the following statements regarding Article 15. It prohibits discrimination only by the state. Actually, it is incorrect. Can Article 15 jota amara rahila, it prohibits discrimination not only by the state but also it restricts the access discrimination by the private entities also. केवल स्टेट नो तो एटा इनकरेक्ट हेगला. स्टेटमेंट 2 करेक्ट अछि. आर्टिकल 15 क्लॉज 3 रे आमे देखिबा को पाई थाउ एक्सप्लिसिटली अलाउज स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन सेतरे प्रोवाइड. सो एटा करेक्ट हबो. स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट हबो काना जो रिजर्वेशन दिया जाउ छी ईडब्ल्यूएस मानको इट वाज एनेबल्ड बाय द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जोटा 2009 रे हेतला जोटा की इंसर्ट कला आर्टिकल 15 क्लॉज 6. Okay, this is correct. Answer about 2 and 3. Consider the following statements regarding Article 16. Reservation in the public employment cannot exceed 50% under all circumstances. It is incorrect. Because 50% reservation ceiling rahila and a ceiling ta ko case under re astila. Just note it down ki Indra Sawhney case. ओके एटा गोटे जनरल रूल किंतु एथरे भी एक्सेप्शन अच्छी. फॉर एग्जांपल एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांस कि किछि बाकी कोन से स्टेट रे एटा को भी एक्सीड करा जाय. सो इट इज नॉट एब्सोल्यूट अंडर ऑल द सर्कमस्टांसेस. दिस इज इनकरेक्ट. स्टेटमेंट 2 करेक्ट अछि काना जो क्रीमी लेयर प्रिंसिपल रहला it applies to the OBC reservation to exclude the socially advanced among the OBCs. Then statement 3 is incorrect and article 16 it only to public employment. Okay, applies, it does not apply to private employment, only public employment. So, sorry, incorrect. Answer aba ethi 2 only thiba, ha 2 only. 35. Consider the following statements regarding article 19 clause 1 subclause C. It guarantees freedom to carry on any profession. Correct achi kana guarantee eta kare freedom to carry out any profession or trade. Statement 2 भी एथी actually correct अछि. State may impose professional qualification. Yes, जेमति कि for example law degree for advocate हैला कि doctor हवा पाई कि medical degree दरकार. State can create monopolies in certain trade. Yes, article 19 clause 6 रे एटा अछि कि state monopoly create करि परिबे in certain trade or business. So answer about 1, 2 and 3. 36. With reference to article 17, consider the following. Statement, it abolishes untouchability. Correct, in any form. Statement 2 कहला कि it is enforceable against the private individuals. Also correct. Public private दी जन को पाई कि एटा applicable unlike many जो fundamental right रहला जोटा कि apply mainly against the state. Statement 3 भी एटी correct अछि. Parliament enacted a law to give effect to it. Okay, and say law कोन enacted protection of civil rights act जोटा कि implement करे article 17 को. Answer about 1, 2 and 3. 37. Consider the following statements regarding article 18.
द स्टेट कैनॉट कन्फर मिलिटरी डिस्टिंक्शन एटा इनकरेक्ट अच्छी कहीं स्टेट मिलिटरी एकेडमिक डिस्टिंक्शन से कन्फर कर से केवल बैन कर टाइटल्स को जमती कि राय बहादुर है सर राज बहादुर ओके सो एटा इनकरेक्ट अच्छी सिटीजन कैनॉट एक्सेप्ट टाइटल्स फ्रॉम जस्ट अ सेकंड फ्रॉम फॉरेन स्टेट सिटीजन मैंने एक्सेप्ट करें किंतु विदाउट गवर्नमेंट कंसेंट एक्सेप्ट करें तो विथ गवर्नमेंट कंसेंट से एक्सेप्ट करें दिस इज इनकरेक्ट then statement 3 कहले कि academic distinction are permitted yes okay citizen cannot accept titles from the foreign states हाँ without actually this statement is incomplete without government consent तो एमती देखिया गले ठीक ही अच्छी आई मीन सिटीजन दे कैनॉट एक्सेप्ट टाइटल फ्रॉम द फॉरेन स्टेट से गवर्नमेंट कंसेंट दरकार बट स्टेटमेंट एटा पूरा हबार एडी थिला ओके तो मु तो कहीदेली कॉन्सेप्ट कौन हम द गोल्डन ट्रायंगल डॉक्ट्रिन रिलेट्स टू आर्टिकल 14 19 एंड 21 एटा समस्त एटी आंसर मते करंतु 10 सेकंड्स रे 12 13 14 19 20 21 15 16 17 दिस इज अ रियली गुड क्वेश्चन Article 14, 19 and 21 answer अब option number A 14 होची equality 19 freedom then 21 होची life and liberty 39 article 13 ऊपर statements अच्छी laws inconsistent with fundamental rights are void correct and 13 कोई से law गुड़ा का inconsistent void जोटा कि fundamental right against जाए it applies only to the post constitutional laws both pre और post constitutional laws पर ये applicable statement 3 होची actually correct अच्छी एटा it is the constitutional basis of judicial review in India so answer about 1 and 3 only Citizenship Amendment Act 2019 it applies to migrants from Pakistan Bangladesh and Afghanistan correct statement 2 incorrect अछि Muslims mane ethre they are not included among the eligible minorities it provides fast track citizenship to the specified minorities this is correct so answer amar kon habo 1 and 3 consider the following statements regarding article 12 state include the government and the parliament public sector undertakings may fall within the definition of state private companies automatically fall under article 12 first statement को लगा article 12 it include government and parliament this is correct and जो सेकंड स्टेटमेंट रहा पीएससी और जो गवर्नमेंट कंट्रोल बॉडीज रहे से भी स्टेट हिसाब से ट्रीट करा जाई पारे इफ दे मीट द टेस्ट जमती कि फाइनेंशियल कंट्रोल है डीप स्टेट सुपरविजन है सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट अच्छी कहीं जो प्राइवेट कंपनीज मैंने रही से ऑटोमेटिकली आर्टिकल 12 अंडर आसती अनलेस दे परफॉर्म पब्लिक फंक्शन एंड मीट द जुडिशियल टेस्ट सो दिस इज इनकरेक्ट आंसर अबाउट 1 and 2 only then consider the following statements regarding article 19 it guarantees 6 freedoms correct अच्छी
factual question, then factual statement, then during the national emergency, article 352 national emergency का अंडर जाए 352 अंडर रे article 19 जोटा रहिला सेटा automatically suspend हो जाए, it applies during national emergency automatically. So this is incorrect, and during national emergency article 19 is automatically suspended only when emergency is on the grounds of war or external aggression. एंड national emergency रे केवल war आउ external aggression ही जाएनी, बाकी emergencies भी जाए जेमती कि internal struggle भी हला सेटा भी जाए. So এটা incorrect हला. Restriction must be reasonable and specified in the constitution. Obviously restriction reasonable हवा दरकार और specifically listed हवा दरकार जेमती security, morality, public order etc. And answer above 1 and 3. Consider the following statements regarding the Similipal National Park. Similipal National Park it actually incorrect hoba. It has recently been officially designated as a national park by the Odisha government. Similipal National Park को declare कर दिया जाइଥିଲା national park बहुत पूर्वरु, I mean 1980 रू ही. It was not recently declared. Statement 2 correct अछि. It is a part of UNESCO World Network of Biosphere Reserves added in 2009. Then এটা Eastern Ghats Chotnagpur Plateau Transition Zone रे lie करे, often grouped with Eastern Ghat Ecological Region. Okay, answer above 2 and 3. 44. With reference to the sachet mobile application, consider the following statements. It has been launched by National Disaster Management Authority. It provides real-time alerts regarding natural disasters. It is exclusively designed for the financial risk assessment. Sachet mobile app, statement 1 correct अछि. App टा national disaster management NDMA द्वारा launch करा जाइछि. Then ये real time alert provide करे disaster पे जेमति cyclone, flood and earthquakes हला. Then statement 3 is incorrect. It is not for financial risk assessment. It is a disaster warning app. Okay, so 1 and 2 haba correct. Consider the following statements regarding the Indus Water Treaty. Statement 1 correct अछि. Indus Water Treaty it was signed in 1960 between India and Pakistan. This is correct. World Bank gote mediator and signatory हिसाब रे act करे, played a mediatory in the treaty. It allocates 6 rivers of the Indus system exclusively to India. No, this is absolutely incorrect. kind जो eastern rivers रहिले सेटा India को मिलिछि and जो western part रहिला Pakistan. Not all the 6 goes to India. Then 46. With reference to the 106th Constitutional Amendment Act, consider the following statements. It provides reservation for women in the Lok Sabha. Correct अछि kana jo 106th Constitutional Amendment Act rahila seta 33% reservation provide କରୁଛି women ମାନଙ୍କୁ in Lok Sabha. So this is correct. It provides reservation for women in the state legislative assemblies. It is also correct कि state legislative assemblies ପାଇଁ ବି women ଙ୍କର reservation ସେଠି ଅଛି. Statement 3 is incorrect and it does not provide reservation in the Rajya Sabha or the state legislative councils. माने जो upper house रहिले तांको ପାଇଁ कि सेठी reservation नाही women ମାନଙ୍କ प्रति. So answer about 1 and 2. Consider the following statements regarding Arctic amplification. It refers to the rapid warming of the Arctic region compared to the global average. It is primarily caused by increased albedo due to ice formation. It contributes to extreme weather patterns in the mid latitudes. Which of the statements given above are correct? 1 and 3 dechi, 1 only dechi, then 2 and 3, 1, 2, 3.
Statement 1 is correct. Arctic amplification, it refers to the Arctic warming जोटा कि ग्लोबल एवरेज ठारू फास्ट चलची ड्यू टू फीडबैक प्रोसेस. स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट अच्छी कहीं एटा मेनली जो डिक्रीज्ड अल्बेडो द्वारा हुए नॉट इंक्रीज्ड. स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट कैन रैपिड आर्कटिक वार्मिंग इट डिस्टर्ब्स द जेट स्ट्रीम जोटा कि एक्सट्रीम वेदर फर्दर करई पारे इन मिड लैटिट्यूड्स कोल्ड वेव्स हीट डोम्स फ्लड्स. कैलाश मानसरोवर यात्रा. Lake Mansarovar is located in the Tibet Autonomous Region of China. Correct अछि. Lake Mansarovar, it lies in the Tibet Autonomous Region. Lipulekh Pass and Nathula Pass are two routes used by Indian pilgrims. Correct अछि. Indian pilgrims semane ei routes via travel karanti. Statement 3 भी correct अछि. Mount Kailash is sacred in Hinduism, Buddhism, Jainism and Bon religion. With reference to the fast breeder reactor FBR at Kalpakkam, consider the following statements. Statement 1 correct अछि. India रो जो तीनटा stage nuclear program रहिला, second stage uses this fast breeder reactors fueled by what? Plutonium. Statement 2 भी correct अछि. जो कलपक्कम FBR से plutonium based MOX fuel को use करंदी mixed oxides. Statement 3 भी actually incorrect अछि. It operated by Bhavini, not Bhel. Last question, consider the following statements regarding the emission trading scheme. Statement 1 actually correct अछि. Emission trading scheme होची गोटे market based mechanism जोटी कि industries माने से माने तांगर emission permit को किणा बिका करि परिबे. So it is a market based mechanism to control pollution. सूरत ETS, सूरत emission trading scheme से particulate matter को target करे PM pollution from industries. So this is also correct. Statement 3 incorrect अछि. ETS does not ban industries. इसी गोटे कैप सेट कर दिए एंड तापरे से ट्रेडिंग अलाउ कर दिए से ऑफ एमिशन अलाउंसेस. ओके, इट इज अ कैप एंड ट्रेड सिस्टम. सो द आंसर विल बी बी 1 and 2. ओके, तो आज एटा लास्ट क्वेश्चन थिला. नेक्स्ट क्लास रे हमें अनदर 50 क्वेश्चंस डिस्कस करबा जोटा कि समस्त टेस्ट देला पर हमें तार डिस्कशन क्लास एटी कंडक्ट करू. Okay, so thank you for your patience and thank you for watching.